खुशामदीद कहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए और उनको ये पैगाम देने के लिए कि जबकि इस वक्त पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े सैलाब और तबाही से दो चार है, आज जनाब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं यकजहती का इज़हार करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसी तौर पर वो करोड़ों लोग जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और दूसरे इलाकों में, वो ये बताने आए हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, बल्कि वो तमाम अपनी जो उनकी डोमेन में जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे और पाकिस्तान की इस मुसीबत की घड़ी में अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए और जो हमारे पुल, हज़ारों सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो तबाह हो गया है, उसकी बहाली और मरम्मत के लिए जो कुछ भी इनसे बन पड़ा ये करेंगे। लेकिन आज इन्होंने जो बतौर सेक्रेटरी जनरल जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बहुत मुतासर हुआ हूँ। अगर पाकिस्तानियों से बढ़ के नहीं तो पाकिस्तानियों की तरह इन्होंने गुफ्तगू की है, उनको एहसास को जाना है, उनको दुख में शरीक हुए हैं और दिल की अथाह गहराइयों से बात की है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब सेक्रेटरी जनरल का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाउ सेक्रेटरी जनरल, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Allow me first a few words to the Pakistani people and then to people around the world. To the Pakistani people, I am no stranger to Pakistan. I have a love affair with your country since 17 years ago, when I started my functions as High Commissioner for Refugees. And I've always witnessed your enormous generosity, receiving at the moment more than 6 million Afghan refugees, protecting, assisting them, sharing your meager resources with them. And I've seen your generosity, helping each other, family helping family, community helping community. When I came in 2005 because of the earthquake, when I came in 2010 because of the floods, and when I came later during the dramatic incursion of terrorism around Swat Valley and further when they are close to Islamabad and hundreds of thousands of people were displaced, and I was there with them. And so I know what it means for the Pakistani people, this unprecedented natural disaster. There is no memory of anything similar to what has happened with this impact of climate change on Pakistan. And I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation in which, beyond the numbers are appalling, but beyond the numbers, I see the families that lost their loved ones. I see the families that lost their houses. I see the families that lost their crops. I see the families that lost their crops, that lost their jobs, and that are living in desperate conditions at the present moment. And I've seen the enormous effort of response from civil servants, the government, from the army, from the NGOs, from the population, in an extraordinary demonstration of solidarity within the borders of Pakistan. But I want to say a few words to the international community. Pakistan needs massive financial support to respond
to this crisis that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion and counting. And that support is entirely necessary, and it is not a matter of solidarity, it's a matter of justice. Pakistan has not contributed in a meaningful way to climate change. The level of emissions of this country is relatively low. But Pakistan is one of the most dramatically impacted countries by climate change. It's the front line of the impact of climate change. And it is absolutely essential that this is recognized by the international community, especially by those countries that have more contributed to climate change, and that effective solidarity, effective justice is now shown by mobilizing massive supports for relief, for rehabilitation, or for reconstruction after these devastating impacts of the monsoon plus the accelerated melting of glaciers. And at the same time, this is the moment to say that we are heading into a disaster. We have waged war on nature, and nature is striking back, and striking back in a devastating way. Today in Pakistan, tomorrow in any of your countries. And we need to stop the increase of emissions and start reducing them now. And at the same time, we need to mobilize much more resources to support those countries that need to build resilience. It is what is called adaptation, that need to create the conditions to resist to the impact of these devastating disasters caused by climate change. And at the same time, as a matter of justice, to put seriously on the table in the next Conference of States Party of the Convention, the question of loss and damage. That is something that has been, until now, not discussed seriously in the international community. This is a time to mobilize the efforts of everybody against climate change, and this is a time to mobilize every goodwill in the world to support massively the Pakistani people in this dramatic hour. You have been extremely kind, generous and passionate. Your help to Pakistan will help helpless people in this country. Thank you. Well, I told you that this great human being, Secretary General, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan, but by all those who have a human heart, who are compassionate, who have empathy, and who are generous, speaking from the core of the heart. And I am deeply touched by his message today, by his statement today. This is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. Thank you. आपको पता चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा
अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने मुलाकात भी की और इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की मद में पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के दौरान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान इस दौरान क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासिर जरूर हुआ है और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो पाकिस्तान की इस सूरत हाल में आगे बढ़कर मदद करें। लोग अपनी फसलें, अपने घर तबाह होता देख रहे हैं और पाकिस्तान इस दौरान शदीद मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस दौरान सैलाब मुतासिरीन के लिए जो भी इमदाद मिलेगी वो हम शफाफियत के साथ इसे आगे मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से भी दरख्वास्त की कि वो आगे बढ़ के पाकिस्तान की मदद करें। उन्होंने इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बताते चलें कि इससे कबल वज़ीर आज़म हाउस भी आमद हुए एंटोनियो गुतरेस की। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस दौरान दीगर वज़रा भी मौजूद थे और आज उन्हें इस तमाम तर सूरत हाल से, सैलाब की सूरत हाल से आगाह भी किया गया और डिटेल ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से किस कदर तबाही हुई है मुल्क में, इस दौरान उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे और क्लाइमेट चेंज की सूरत में जो है वो ये जो मामलात उठ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुदरती आफात आ रही हैं, इनसे निपटने के लिए हमें मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली की जरूरत है।